हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट विद्या यूट्यूब चैनल। आज हम एनटीपीसी असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी 2025 मेमोरी बेस्ड एंड मॉडल क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रहेगा पार्ट 1। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट लेके आने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ PCl5 इन गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में PCl5 exist as a covalent molecule। तो gaseous state में PCl5 exist as covalent molecule and TBP structure। solid state में PCl5 exist as ionic species PCl4 plus and PCl6 minus। पहला स्टेटमेंट है, द मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू दी D3H पॉइंट ग्रुप। PCl5 का स्ट्रक्चर होता है TBP, 3Cl इक्विटोरियल में एंड 2Cl एक्सियल में। तो इसका अगर पॉइंट ग्रुप देखें तो इधर से एक C3 क्लोरीन एक्सियल P क्लोरीन, इधर से एक C3 पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगा। ये Cl इसमें आ जाएगा, ये Cl इसमें चला जाएगा और ये Cl इसमें चला जाएगा, 120 डिग्री रोटेशन। सो इसमें एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। उसके बाद इसमें 3C2 होगा। इसको अगर इधर से 180 डिग्री रोटेट करें, ये Cl, ये इक्विटोरियल Cl, इस इक्विटोरियल Cl में 180 डिग्री रोटेशन होगा और ये एक्सियल Cl, ये एक्सियल Cl को 180 डिग्री रोटेट करेगा। ऐसे करके 3C2 मिलेगा। इसमें से एक C2 और इसमें से एक C2, टोटल 3C2 मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखें सिग्मा भी, तो इस एंगल से अगर प्लेन पास करें तो ये इक्विटोरियल Cl इस इक्विटोरियल Cl को रिफ्लेक्ट करेगा और ये एक्सियल Cl इस एक्सियल Cl को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे करके इधर से भी एक प्लेन मिलेगा और इधर से भी एक प्लेन मिलेगा। टोटल 3 सिग्मा भी मिलेगा, 3 सिग्मा भी। नेक्स्ट इसमें ये जो इक्विटोरियल प्लेन है, ये 3Cl बॉन्ड एंड P एक प्लेन में है और इसमें से जो C3 एक्सिस पास हो रहा है उसका परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है, इक्विटोरियल प्लेन है, तो ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस का। तो इस प्लेन को हम बोलेंगे सिग्मा एच। तो 1 सिग्मा एच होगा। तो ये सब अगर सिमेट्री एलिमेंट होगा तो उसका पॉइंट ग्रुप होगा D3H। अगर सिग्मा एच एब्सेंट होता तो इसका पॉइंट ग्रुप होता D3D। ओके, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है, द टू एक्सियल PCl bonds आर लॉन्गर देन द 3 इक्विटोरियल PCl bonds। सो ये जो एक्सियल Cl2 है, Cl2 एक्सियल, इसके साथ Cl1 के साथ 90 डिग्री रिपल्शन है, Cl3 के साथ 90 डिग्री रिपल्शन है एंड Cl4 के साथ 90 डिग्री रिपल्शन है। और अगर हम इक्विटोरियल Cl1 को देखें, Cl1 इक्विटोरियल, तो इसके साथ इस Cl2 के साथ 90 डिग्री रिपल्शन एंड Cl5 के साथ 90 डिग्री रिपल्शन। Cl2 एंड Cl5 90 डिग्री रिपल्शन एंड Cl1 Cl3 के साथ 120 डिग्री रिपल्शन, लेकिन 90 डिग्री रिपल्शन आर स्ट्रॉन्गर देन 120 डिग्री रिपल्शन। So axial bond experiences greater electron pair repulsion. To reduce this repulsion, the axial bonds becomes slightly longer and therefore slightly weaker. So इसी वजह से एक्सियल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है इक्विटोरियल बॉन्ड से। तो इसका अगर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट देखें
एक्सियल पीसीएल का बॉन्ड लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 2.19 एंगस्ट्रॉम और इक्वेटोरियल पीसीएल का बॉन्ड लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 2.02 एंगस्ट्रॉम. Hence, the axial bonds are longer than the equatorial bonds. So, statement 2 is correct. At room temperature, all five chlorine atoms becomes chemically equivalent on the NMR time scale due to rapid Barry pseudo rotation. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि बैरी pseudo रोटेशन में एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में चला जाता है. इसलिए जो टोटल 5 क्लोरीन है फॉस्फोरस के आसपास, तो 5 क्लोरीन का इन्वायरमेंट सेम हो जाता है. During this process, axial chlorine atoms becomes equatorial, equatorial chlorine atoms become axial. This exchange occurs continuously and very rapidly at room temperature. Now consider what happens in NMR experiment. NMR spectroscopy observes molecules over a specific time scale. If atoms exchange position much faster than the NMR time scale, the instrument cannot distinguish between the different environments. Instead, it detects the average environment. As a result, all five chlorine atoms appear chemically equivalent and only one chlorine environment is observed. So, पांचों क्लोरीन का वन सिग्नल आएगा. तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है. अगर हम टेम्परेचर अराउंड -79 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो इस टाइम में जो एक्सचेंज इतना फास्ट नहीं होगा, तो उस टाइम में हम दो एनएमआर सिग्नल मिलेगा. 3Cl इक्वेटोरियल का अलग मिलेगा एंड 2Cl एक्सियल का अलग एनएमआर सिग्नल मिलेगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड लेंथ इज प्राइमरीली ड्यू टू सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉस्फोरस 3d ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग. तो इसका रीजन ये नहीं है. Earlier, chemists believed that phosphorus expanded its octet by using vacant 3d orbitals, resulting in sp3d hybridization. However, modern theoretical and computational studies have shown that the contribution of phosphorus 3d orbital is extremely small and not the primary reason for bonding. Today, hypervalent molecules such as PCl5 are better explained using molecular orbital theory, 3 center 4 electron bonding. ये जो Cl axial, phosphorus Cl axial, इसमें 3 center 4 electron bonding होता है. और delocalized bonding models, the longer axial bond are mainly a consequence of greater electron pair repulsion, not significant participation of phosphorus 3d orbitals. Therefore, statement 4 is incorrect. Okay. So, correct option A, 1, 2, and 3 only correct. So, 1, 2, and 3 only correct. Next, question 2. A second order reaction, rate constant 0.20 liter mole inverse second inverse. If the initial concentration of the reactant is 0.50 mole liter inverse, the half life of the reaction. तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का? टी हाफ इक्वल 1 रेट कांस्टेंट इनटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो ये होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. के का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.20 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स. एंड जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? A0 इक्वल 0.50 मोल लीटर इनवर्स. तो टी हब का वैल्यू कितना आएगा? टी हब इक्वल 1/0.20 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स इंटू 0.50 मोल लीटर इनवर्स. सो लीटर इनवर्स लीटर काट जाएगा, मोल इनवर्स मोल काट जाएगा, नीचे रहेगा सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाके होगा सेकेंड. तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? 1/0.20 इंटू 0.50 सेकेंड. तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 10 सेकेंड. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 10 सेकेंड. क्वेश्चन 3. Which one of the following statements
regarding the third law of thermodynamics is not correct. नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये ध्यान में रखना. द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है उसका एंट्रोपी एट 0 केल्विन इक्वल 0 होता है, प्रोवाइडेड द क्रिस्टल हैज अ यूनिक ग्राउंड स्टेट. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. The third law permits the calculation of absolute entropy by integrating heat capacity from 0 Kelvin to the desired temperature. ये statement भी correct है. Since the entropy at 0 Kelvin is known, the absolute entropy at any temperature can be calculated using entropy equal 0 to T Cp by T dt plus summation delta H transition divided by T ट्रांजिशन. ओके, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, according to the third law it is possible to reduce the temperature of a system to exactly 0 Kelvin by a finite number of thermodynamic process. ये स्टेटमेंट incorrect है. The unattainability principle, a consequence of the third law, states that absolute 0 Kelvin cannot be reached by any finite number of thermodynamic process. So ये cannot होगा. ओके, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा. तो आंसर होगा सी. इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आंसर सी. डी देख लेते हैं. ए क्रिस्टल पोसेसिंग रेसिडुअल कॉन्फ़िगरेशन डिसऑर्डर एट 0 केल्विन may have a non-zero entropy even at absolute 0 Kelvin. So ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि अगर इफ अ क्रिस्टल हैज रेसिडुअल कॉन्फ़िगरेशनल डिसऑर्डर एट 0 केल्विन, जैसे आइस का, इट पोसेसेस रेसिडुअल एंट्रोपी. ओके, so it is entropy is not zero. Entropy at 0 Kelvin not equal 0 होता है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी. आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4. The rate constant of a diffusion control reaction is directly proportional to the sum of the diffusion coefficient of the reacting species. If the diffusion coefficient of reactants A and B are 2.0 into 10 to the minus 9 and 3.0 into 10 to the minus 9 meter square second inverse respectively, and the rate constant is atho, what will be the rate constant if the diffusion coefficient of reactant B is double while all other parameters remain unchanged? तो K2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा है. सो इसके लिए स्मॉल चॉइस की डिफ्यूशन कंट्रोल रेट इक्वेशन के इक्वल 4 पाई आर एन ए डी ए प्लस डी वी इंटू 10 टू द पावर 3. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेट कांस्टेंट ऑफ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज. तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीए प्लस डीवी, बाकी सब कांस्टेंट है. डीए क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड डीवी क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी. सो इनिशियली डी ए एंड डीबी का वैल्यू कितना था, डी ए का वैल्यू था इनिशियली 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, एंड डीबी का वैल्यू था 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. और रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना था, K1 इक्वल 5.0 इंटू 10 टू द पावर 9 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स. When the diffusion coefficient of B
is double, so dB प्राइम का वैल्यू कितना हुआ 6.0 इंटू 10⁻⁻9 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। पहले था 3.0 इंटू 10⁻⁹, इसको डबल करने से 6.0 इंटू 10⁻⁹। एंड बाकी सब पैरामीटर सेम होगा। तो डी ए कितना होगा, डी ए था 2.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो के का वैल्यू कैलकुलेट करना है, K2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल DA प्राइम प्लस DB प्राइम डिवाइडेड बाई DA प्लस DB। तो K2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और K1 का वैल्यू कितना है 5.0 इंटू 10⁻9 इक्वल DA प्राइम का वैल्यू कितना है 2.0 प्लस DB प्राइम का 6.0 इंटू 10⁻⁹ एंड DA का वैल्यू कितना है 2.0 प्लस DB का 3.0 इंटू 10⁻⁹। 10⁻⁻9 काट गया तो नेक्स्ट आएगा 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 5। तो K2 का वैल्यू होगा 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻9। सो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 8 इंटू 10⁻9। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 8.0 इंटू 10⁻9 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो करेक्ट ऑप्शन आंसर बी। क्वेश्चन 5, in the preparation of salicylic acid from phenol by Kolbe-Smith reaction, the reaction is carried out using sodium phenoxide and CO2 under high pressure, followed by acidification. Which of the following statement is correct? तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा है। तो पहले कोल्बे स्मिथ रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये फेनोल, सो OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को ले लेगा, फिर O माइनस, ये O माइनस कॉन्जुगेशन पे जाएगा, O उसके साथ सोडियम प्लस एंड C डबल बॉन्ड O, ये माइनस। ओके, ये माइनस जाके इधर CO2 में अटैक करेगा, फिर डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन और इधर C डबल बॉन्ड O, O माइनस सोडियम प्लस, फिर H3O प्लस से एक हाइड्रोजन ले लेगा, मतलब एसिडिफिकेशन हो जाएगा, और इधर से इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। तो एरोमेटाइज हो गया, डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये O माइनस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो फेनोल से सैलिसाइलिक एसिड प्रिपरेशन हो गया। ये है फेनोल, ये है सैलिसाइलिक एसिड। ओके, एंड ये है सोडियम फेनोक्साइड। ओके, ऑप्शन ए, द रिएक्शन प्रोसीड efficiently with phenol itself. Formation of sodium phenoxide is not essential. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि फेनोल itself is much less reactive toward carboxylation. Formation of sodium phenoxide is essential because the phenoxide ion strongly activate the aromatic ring toward electrophilic attack by CO2. So option A incorrect. Next option, carboxylation occur predominantly at the ortho position because the sodium ion coordinate with oxygen, favoring ortho attack of CO2 under the reaction condition. ये ऑप्शन करेक्ट है
In the Kolbe-Smith reaction, sodium phenoxide reacts with CO2 under high pressure. The sodium plus ions remains associated with the phenoxide oxygen which favor orthocarboxylation. ये orthocarboxylation favor कर रहा है. After acidification, the major product obtained is salicylic acid. Okay, तो option B correct है and option B answer है. Next option, the major product obtained after acidification is para-hydroxybenzoic acid due to lower steric hindrance at the para position. ये option incorrect है. Although a small amount of para-hydroxybenzoic acid may be formed, the orthoisomer salicylic acid is the major product under the standard Kolbe-Smith reaction condition. So, option C incorrect. The reaction involves electrophilic substitution by the carbonate ion. ये incorrect है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो रहा है? CO2 में, नॉट कार्बोनेट आयन पे. तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन आंसर बी. ओके, क्वेश्चन 6 जनरल इंग्लिश से which statement correctly distinguishes linguistic from philology? Okay, let's understand the difference carefully. Linguistic is the scientific study of language. तो linguistics क्या है? Scientific study of language. Okay, it examines how language are structured, how speech sounds are produced, how words and sentences are formed, how meanings are conveyed, and how language are used in communication. ये होता है linguistics. And on the other hand, philology focuses on the historical development of language, development of languages. Okay, by studying ancient manuscript, written text, it helps us understand how languages have evolved over time. So now let's eliminate the incorrect option. Option A incorrect. Linguistic is not limited to ancient languages. It studies both modern and ancient languages. Option B incorrect. Philology mainly studies written text, not spoken language. Okay, ये भी incorrect है. Option D ये भी incorrect है. Linguistic and phonology are related fields, but they are not the same. तो ये भी incorrect है. So correct option answer C. Linguistics scientifically analyze language, while philology focuses on the historical development of languages through text. Okay, answer option C. Next, question 7. What is the meaning of the word predicament? तो the word predicament, ये जो predicament है, इसका meaning है difficult, tricky और unpleasant situation. Okay, so predicament का meaning क्या है? Difficult, tricky or unpleasant situation from which it is hard to find solution. For example, अगर एक example ले, after losing his wallet while traveling, he found himself in a serious predicament. Okay, now let's eliminate the incorrect option. Option A incorrect. A predicament is not a pleasant surprise. Option C
Incorrect. It does not mean a success or achievement. Option D, incorrect. It is not related to an agreement or peace. Correct answer, option B. So, a difficult or unpleasant situation. So, correct answer, option B. Next question, question 8. Choose the correctly spelled word. The correct spelling is predecessor. Okay, which means a person who held a position or job before someone else. इसका मीनिंग है a person who held a position or job before someone else. Okay, so इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, predecessor. Okay, next question 9. Find the odd one out. नंबर है 9, 27, 15, 11, 39, 42. तो इसमें से कॉमन है 9 मल्टीपल ऑफ 3, 27 मल्टीपल ऑफ 3, 15 मल्टीपल ऑफ 3, 11 नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 39 मल्टीपल ऑफ 3 and 42 multiple of 3. So 11 not a multiple of 3. Since all the other number are divisible by 3, 11 is the odd one out. Therefore, the correct answer is option A, 11. Next question, question 10. The ratio of the ages of A and B 6 years ago was 2:3. Their present age ratio is 5:7. तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी. ए का है 5 इंटू एक्स एंड बी का 7x. तो 6 ईयर एगो कितना होगा? 5x से -6 होगा डिवाइडेड बाई 7x से -6. रेशियो क्या है? 2:3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करने के बाद क्या आएगा? 3 इंटू 5x माइनस 6 equal 2 into 7x minus 6. So 15x minus 18 equal 14x minus 12. इसका वैल्यू आएगा 15x minus 14x equal x equal 6. So the present ages are a का होगा 5 into x का वैल्यू कितना है 6, 30 years एंड बी का कितना आएगा 7 into 6 equal 42 years. तो आफ्टर 3 years ए का वैल्यू कितना होगा? ए का एज 33 years एंड बी का कितना होगा? 42 plus 3 equal 45 years. Okay, therefore the correct answer is option A, 33 years and 45 years. थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए. ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया इसलिए मैं इस इधर ही इन कर रहा हूँ. तो अगर पार्ट 2 चाहिए इसके लिए कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना. तो इस वीडियो में अगर ठीक ठाक लाइक आया मैं कोशिश करूँगा पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आने के लिए. थैंक यू सो मच.